pathway, you have around 4 activities, and these all are meant to help you reach a specific learning objectives by the end of that pathway, all right? And after each pathway, you have a quiz. क्विज क्यों है क्विज क्यों लेते हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आपने क्या सीखा है कितना सीखा है ओके एंड दीज शॉर्ट क्विजेज विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर दैट ग्रैंड क्विज जो कि आपका आई थिंक 6 और 7 नवंबर को होना है राइट या और क्विज के लिए परेशान नहीं होना क्योंकि यू कैन रीट्राई द क्विज अगेन एंड अगेन ओके सो इफ यू अगर पहले क्विज में आपका स्कोर कम आता है देन यू डोंट हैव टू वरी आप दोबारा से वो क्विज ले सकते हो ऑलराइट and after you complete a specific pathway you earn badges okay और ये badges मैंने आपको भी बताया कि वो आपके developer profile में add हो जाएंगी and you will be all good for the swags and you will be all ready for the swags yeah okay and yeah above all why do you think कि हमें Android सीखो में participate क्यों करना चाहिए the very most reason for it yes क्योंकि स्वैग I'm going to चाहिए be हमें। honest. I'm very intrigued by the mug. I broke my mug a couple of weeks ago and I really want that one. yes we want swags right हमें swags चाहिए because मुझे swags टॉपी cool है चाहिए यस प्लीज। हाँ ऑब्वियसली हमें स्वैग yeah चाहिए। कोई हमारे पास किसी को swag टॉपी मिले मुझे मुझे दे दे प्लीज प्लीज। हाँ हाँ नहीं टॉपी खुद Learn लेनी पड़ेगी Android करके in a professional नहीं way. ना गूगल ब्रांड एंड्रॉइड लिखो इतना स्कूल। yeah one by one okay yeah somebody was speaking आपका volume थोड़ा low था can you say that again To learn Android in a deeper and professional way. yeah or yeah that's right and most of us including me we want swags and we will do the pathways we will do the units मैं भी करूंगी and yes we will win the swags and side by side, the very most thing, we will be learning how to develop Android apps. Okay. Now, जो But सारा I want learning to platform learn है, Android. yep. Sorry. I guess it was Humair and he Nothing. was Go saying ahead. that he Go ahead. want to learn Android. He wanted to learn Oh Android. yeah, that's awesome. So Humair, maybe after this course, inshallah, you might be able to, maybe make a pathway if you want to learn Android. So I appreciate you pay very good attention to this today. All right. I have a That's a question good comment. that how I will join जी, the next sessions or next So unit. no, Android सीखो में basically it's a self-paced course. आपके पास सारे सारे जो resources हैं वो मैंने slides के end में डाल दिए हैं उनके links वो resources आपको provided हैं और जो भी units हैं और उनके pathways और activities हैं वो step by step आप उधर से उनको access कर सकते हो ठीक है आज हम सिर्फ यूनिट 1 का फर्स्ट पाथवे कराएंगे बिकॉज ये सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है सो वी कैन नॉट रियली डू ऑल ऑफ इट फॉर यू ये आपने खुद करना है but just in case you are doing it and you're stuck somewhere and you need assistance, you can just direct message me, okay? लेकिन इवेंट में हमने सिर्फ फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पाथवे कवर किया है because this is again a self-paced event, okay? So जो एक्सेस I करने का Where तरीका I है वो can इंशाल्लाह direct I'll give message you you. the resources, the links और उनसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं इसको एक्सेस I think he was asking how he can join other events. So if you could clear that Oh, up for him. GDSC के अदर इवेंट्स राइट सो मैं आपके साथ हमारे इवेंट प्लेटफॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगी जस्ट जॉइन द प्लेटफॉर्म और जब भी कोई एंड आल्सो द व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी कोई न्यू इवेंट होगा यू विल गेट नोटिफाइड एंड और आप वो इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं ओके Okay, thank you. ऑलराइट मैं इसी मीटिंग के आखिर में मैं शेयर कर दूंगी नो प्रॉब्लम ओके नाउ बैक टू द प्रेजेंटेशन सो इस कोर्स में हम अब Android development सीखेंगे but how we will be learning how to code in Kotlin okay Kotlin doesn't even know what Kotlin is किसी को पता है Kotlin क्या है can anyone tell me anybody's appreciated Programming language used for Android development.
That's right. Programming language that we can use to build Android apps. Mostly, And नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स जो एंड्रॉयड की तरफ से हमें व्यूज प्रोवाइड किए गए हैं। एक हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, एक हमारे पास इमेज व्यू है, और एक हमारे पास बटन व्यू है। ये व्यूज के बारे में आप अपने थर्ड पाथवे में आके पढ़ेंगे, सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन इनसाइट टू ऑल ऑफ इट नाउ। ओके, now, what we'll do is we'll be moving on to the hands-on workshop. और ये आपने अपने own pace पे करनी है. You have to get your laptops ready. And if you get stuck, अगर कहीं पे भी आपको कोई issue आ रहा है, you can ask the facilitators. We have with us Hamza and Umair today. Hamza and Umair will be helping you out. अगर कोई भी आपके जब आप activity कर रहे हो और उसमें कोई भी issue आ जाता है, you can freely reach out. आइदर माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, आइदर आप लोग मीटिंग चैट में लिख सकते हैं, ठीक है? सो वी आर हियर टू आंसर व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, ओके? नाउ, yeah, today we have Sarah Salman with us. She's one of the core team members. And okay, Sarah, now the platform is yours. It's your go. Can we wait a few minutes? यहाँ पे अजान हो रही है. Yep, surely we can. Okay, Assalamu alaikum everyone. I hope you're having a good evening. Well, I'm going to give you a demo on the first pathway so that you can understand how the AndroidSeekho program is going to work. The following pathways, the one after this first one, you will have to do yourselves. If you have any questions, you can ask in the WhatsApp group. The people who are going to be doing this with you will help you out, and I can also help you out if you have any issues. I'm going to share my screen. Please let me know when you can see it. Yes, Sarah, you are audible. yep, it's showing. Okay. Okay, so I believe Samia has introduced what the event is, what we're going to do, but going to show you how to register for it. I'm going to go through these one by one, so you don't have to look at these all at once, and don't be overwhelmed by it because this starts from the very basics. The first thing I'm going to do is I'm going to register for the event. This is the button that you should click on. I'm sorry I didn't tell that to you first. And if you have any issues understanding what I'm doing, please do ask them in the chat. Or yeah, just ask them in the chat. One of the facilitators will help you out, and I can also help you out when I check the chat. So this is what will pop up when you try to sign up for it. Since my email is already signed into my browser because I'm using Chrome, I don't have to do this first Google sign-in part, so you'll have to do that. So should I wait for you guys? Just let me know. Yes, please. Okay, once you sign in, I'll do the second part, the one where you have to enter details. I'll do that with you guys. And please let